Bismillah. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक। प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक के साथ मेरा और आपका साथ रहता है एवरी फ्राइडे को रात 9 बजे के बाद। हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। और अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे, ख़ास तौर पे आज बड़ा स्पेशल ट्रांसमिशन वी आर डूइंग विद आवर हाई कमिश्नर इन ऑटवा फ्रॉम पाकिस्तान, हिज हाइनेस मोहम्मद सलीम साहब। और ख़ास तौर पे जो आज की जो ट्रांसमिशन है इट इज़ वेरी पैरामाउंट बिकॉज आई वांटेड टू discuss with him all the nitty-gritties of this Pakistan role that Pakistan is playing in this mediation with Iran and in with the conflict with Israel and United States, and how the things are progressing and how things are going. But even before that, during the program, if you like to be a part of this show, please, you can see our numbers on our screen, which is 519-923-5220. And this is the number that you can call us during the show and you'd like to interact with the High Commissioner Saab. You have a question in mind you want to ask him. He will be with me for the next few minutes and we will talk to him in detail about this. And Voice of Toronto Television, you are watching on all IPTVs. We are live on Facebook, we're live on YouTube, and we are live on the Bell Network everywhere you are, wherever my voice is going, you can listen to us and you can be a part of this interactive show tonight. Now, if you would like to advertise on Voice of Toronto Television, our numbers are always on the screen. And after the program, you can reach me at 416-786-4881. This is the number to get in touch with me after the program. And we'll be able to help you out as much as possible wherever, our voices, in the GTA, across the city, in the suburbs, wherever you are in the small business, and you would like to advertise with us, we are here to help you out and put the message out very loud and clear. So you will flourish, with your businesses. And this platform is designed for small businesses, as a matter of fact, also. But at the same time, we do a lot of shows for you. And we really appreciate your feedback. And the feedback, you can always write to us at voiceoftorontotv@gmail.com. So tonight, I'm going to take the liberty to welcome our High Commissioner Saab. He's been on my shows in the past, and I'm very thankful. Whenever I have him on my show, we have a very interactive conversation. He's very instrumental in putting the message of Pakistan in Canada, for the Canadians of Pakistani origin, very loudly and clearly in so many ways. And it's always good to, have, a High Commissioner who is very proactive, who is very intellectual, and who have a lot of knowledge, and who is here, who wants to become the voice of Pakistanis in Canada. So let me see if he's there with us, and then we can talk to him in regards to this special discussion that's going on between Pakistan and Iran, and at the same time with the United States. Sir, Assalamu alaikum. A very good evening to you, sir. Walaikum salam. Am I audible? You are audible, sir. Thank you so much for joining, sir. Most welcome. Thank you, Anjum Malik Saab, for having me again. Sir, it's always a pleasure to speak to you and talk to you, especially on my live television program, Voice of Toronto Television. I'm very honored. Thank you so much for your time, especially on a short notice. But I thought it would be a great idea to have you on the show and to get your perspective, because there's so much going on social media and the news right now, and the way the Pakistan has emerged as a leader in the Gulf, in the world right now, I would say. And the credit goes to the government of Pakistan.
our Field Marshal Asim Munir Saab for for doing these negotiations and and really putting Pakistan's perspective that Pakistan is a country that like to have all his neighbors in great harmony. Wars are not the it doesn't good to anyone, and the best way to move forward would be in the world is to have a dialogue, have a resolution in place. And I'm sure that you probably have a lot of more information than we do, being a high commissioner in Canada. So I'm going to simply ask you, sir, first of all, you've been following up on this since it all happened in the last so many weeks, the war itself, and so many casualties, so many people lost their lives. At the same time, infrastructure have been destroyed, and then the Pakistan came into the picture, and Pakistan doing this great negotiations and mediations in between with all these two countries in place, and Lebanon now also. So first of all, from your get-go, sir, when you are looking into all this, what do you think that where are we heading with this mediation? What Pakistan is doing right now, and are we going to get any results out of this in the next coming days? Thank you very much, Anjum Malik Saab. This is not only a subject of topical interest. This war-like situation in the Middle East that started specifically between Islamic Republic of Pakistan, जी जी। Islamic Republic of Iran, and the United States of America. वैसे साहब, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप थोड़ा सा सेंटर में हो जाए अपने कैमरे के, it will be वेरी, और थोड़ा क्लोज आ जाइए कैमरे के, it will be very very yeah, this is great, sir, just in the middle of it. So this way we absolutely right, this is great, sir, thank you so much, thank you. Yeah. So I was just saying that this war in the Middle East, it started on 28th of February, around 7 weeks back. जी जी। Pakistan being in the immediate neighborhood, Pakistan had the luxury of having the trust of all the parties involved, including Islamic Republic of Iran, the Gulf Cooperation Council states, then the United States of America, and so on. So Pakistan had the only option to come forward, being friends with all, to try to facilitate a dialogue rather than war fighting. जी जी। So we are grateful to the conflicting sides that repose the trust and confidence in Pakistan's facilitation, mediation effort. जी जी। And although it took around 6 weeks, but ultimately we were able to get a ceasefire announced between the two sides on the night of 7th, 8th April last week. जी जी। It was for a 2 week ceasefire, and you may have read the tweet of the Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab, which also had a line inviting both United States and Iran delegations to Islamabad for the first round of their Islamabad talks. Right So right। Pakistan succeeded in two major things being done. One, जी to get a ceasefire rather than continuation of the war. Second, to bring the two conflicting sides under one roof, in one room, to chalk out their differences through diplomacy. So it was a great success for Pakistan because this war is a huge loss to the entire world बिल्कुल। community, and we could not afford to have a disturbed region for so long. So we are hopeful that the dialogue process will continue with Pakistan's facilitation.
जी जी One, and I also want to bring on record here that Pakistan's facilitation and mediation effort was actively supported by major stakeholders, including People's Republic of China, Kingdom of Saudi Arabia, Turkey, Egypt, all the GCC countries, most of them, and the two warring conflicting sides, especially Iran and USA, they had the trust in our neutrality and sincerity. So that's where we are, and we will continue with this facilitation. अच्छा एम्बेसडर साहब मैं आपसे ये पूछता चलूँ आई हैव फ्यू थिंग्स टू आस्क यू फॉर आवर ऑडियंस कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड हिज entourage पाकिस्तान में आए थे एंड पाकिस्तान ओपन द डोर्स द डायलॉग स्टार्टेड व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ये डायलॉग जो थे ये एक हतमी शक्ल क्यों नहीं इख्तियार कर सके आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा हमारे कम्युनिटी लोग जो सुन रहे हैं आपको दे वर एबल टू अंडरस्टैंड कि what has transpired that it didn't work out at the first stage और अब दोबारा इस पे हम बात कर रहे हैं आज ठीक, मेरा छोटा सा सवाल है, डू यू वांट माय आंसर टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज और डू यू सर वांट इट टू हम बी? दोनों लैंग्वेजेस में बात करते हैं इट इज़ बेटर दैट वे ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो जाता है बिकॉज इट्स आवर हमारी मादरी ज़ुबान है उर्दू सर so it'd be a great idea to I'll request you if you can highlight in ठीक both हो गया, तो आई languages विल कीप स्विचिंग बिटवीन द टू जी लैंग्वेजेस। बहुत शुक्रिया पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने आप को सालिस के तौर पे पेश किया, जी और सालिस के ऊपर कुछ लवाजिमात होते हैं दुनिया भर में ठीक है कि सालिस जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स की पोजीशंस को बहस नहीं करता। ठीक है सालिस का काम है दोनों को कहना है कि आप बराह करम ये लड़ाई छोड़ें और आप आ जाएं, हम आपके लिए वेन्यू प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल वेन्यू, जी और आप कॉन्फिडेंस में आके आपस में टेबल के ऊपर अपने मसाइल को हल करें बजाय इसके कि आप हालत जंग में रहें। करेक्ट तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब चूंकि सालिसी का वो जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान के ऊपर, दैट इज एन ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल द टाइम द टू साइड्स कंप्लीटली fall into a peace agreement forever, inshallah. So till then we cannot, as Pakistan being the facilitator, we cannot comment on which side is asking for what, or what are the list of demands by the two conflicting sides. It is for them to sit together and to discuss out and reach a common ground for peace and tranquility. अच्छा सर ये मुझे बताइएगा कि अब जो राइट नाउ जो सिचुएशन है जिसमें कि लेबनान में 10 डेज़ का सीज़ फायर अनाउंस किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और आई थिंक 21 अप्रैल तक सीज़ फायर है बिटवीन ईरान एंड इज़राइल। आप समझते हैं कि ये जो आज फ्राइडे है वी आर ऑन 17 अप्रैल, अगले 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर कोई फर्दर नेगोशिएशन इस पर हो सकती हैं और कोई डील जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकती है? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं इन हालात के अंदर, या एट अ लेटर स्टेज ही विल गो? क्या आपको क्या लगता है सर? देखें, being Pakistan's High Commissioner here, Ambassador here, I have a responsibility to give the due sanctity, integrity, confidentiality of the responsibilities that lie on Pakistan as a facilitator. करेक्ट That's why what I said previously, मैं उस बात को दोहराऊंगा कि बतौर सालिस हम किसी चीज़ पे कि क्या सूरत हाल है या पूरे खत्ते में मिडिल ईस्ट से लेके ईरान तक, तो उस पे तबसरा करना हमारा नहीं बनता। हमने अपनी जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है, हमने उस फ़र्ज़ को बखूबी निभाना है एज ए स्टेट। एंड ये हमारी पहली दफ़ा की नहीं है। पाकिस्तान की 78 ईयर्स में इंटरनेशनल मीडिएशन में दुनिया भर में बहुत सारी खदमात हैं। यूनाइटेड नेशंस के
46-47 मिशनों में हमने पीस कीपिंग की है। हमने तकरीबन 1947-48 से आज तक 2 लाख पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड इन वेरियस यूएन पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड। जी जी। आपको पता होगा कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को ब्रिज करने में इन 1971 पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। सो पाकिस्तान इज अ हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड and I would say a very confident and experienced facilitator. We have to be very cautious, conscientious, and very precautious to ensure that Pakistan's credibility as a facilitator is not harmed in any way. And we will continue our efforts. और जो आपका सवाल था कि आगे क्या होने जा रहा है अगले हफ्ता 10 दिन में, तो इंशाल्लाह you will come to know good things will happen. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्रन जो हैं एयरफोर्स के वो सऊदी अरेबिया में अब तैनात किए हैं, तो आप आई नो कि पाकिस्तान का पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ हरमैन शरीफैन की उनकी हिफाजत जो है, बट एट दिस स्टेज जबकि डायलॉग चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, एक मैं जनरल कंसेंसस पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसकी जो मूव थी इसकी क्या वजह हो सकती है? इज़ इट टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया फ्रॉम एन अनसीन दैट कैन हैपन, या इट इज़ अ पाकिस्तान ऑब्लिगेशन टू सेंड द फोर्सेस देयर, जैसे आपने बताया अभी, एज अ पीस कीपर देयर? देखें, आपका सवाल आपके पिछले सवाल से तकरीबन मुताबिकत रखता है। रखता है। There is almost a similar question like your last one in different words. Okay. So look, as of now, Pakistan is a reliable mediator with acceptable to all the sides, particularly the two major warring sides. And the ceasefire is in play, and Pakistan's mediation and facilitation efforts are in full swing. So I cannot literally, it should not be expected of me to be commenting about what is happening. तो Okay. bilateral relations के अलावा इस वक्त पाकिस्तान has taken a much nobler responsibility जी जी। to play as a trusted facilitator. ठीक है। And let this chapter close, and then peace, security, stability, predictability, tranquility comes back to the region, and then the whole region will prosper, inshallah. अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हैव इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर कार्नी टू पाकिस्तान, तो आप क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम बात करते हैं कनाडा के हवाले से कि आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर कार्नी और उनका जो वफ्द है, आर दे गोइंग टू बी गोइंग टू पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली इट इज़ लॉन्गली अवेटेड फॉर सम टाइम कि हाई लेवल पिछली दफ़ा हमने बात की थी इस पर कि हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं गया, ख़ास तौर पे हेड ऑफ़ स्टेट्स जो हैं, तो आप क्या फील करते हैं सर कि दिस इज़ समथिंग इन द पाइपलाइन? देखें, जो बायलैटरल विजिट्स हैं एट मिनिस्ट्रियल लेवल, एट पॉलिटिकल लेवल, एट हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल, दिस इज ऑलवेज प्लान्ड एंड tied up and coordinated through diplomatic channels. And when the visits are finalized, then such plans are announced to the media. As of now, this was the telephonic interaction between the two prime ministers, Prime Minister of Pakistan and Prime Minister of Canada, earlier this week, to 13th ko. The point is they had also had a pull aside meeting Sharm el Sheikh में जब भी मिले थे, if you recall, some months back. So the leadership, particularly Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, he held 3-4 sideline meetings with the Foreign Minister of Canada. I am also in touch with the relevant departments here in Ottawa.
और जब ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो यू विल कम टू नो इंशाल्लाह। अच्छा, सर ये बताइएगा, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि सिंस यू हैव कम टू कनाडा एज अ हाई कमिश्नर, सो व्हाट आर द स्टेप्स हैज़ बीन टेकन कि जो हमारा जो यहाँ का ख़ास तौर पे जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, हाउ इंस्ट्रूमेंटल यू हैव बिन, और जो हमारा ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, उसके कुछ स्टैट्स वगैरह क्या हैं, एंड व्हाट आर समथिंग इन द पाइपलाइन फोर्थ कमिंग इन द मंथ्स टू कम, थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा थोड़ा। ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ है ऑन फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ में। और कनाडा बीइंग 10th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी आई मीन, तो उसमें देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स एंड बिजनेस। जी उसमें जो अपकमिंग मेजर एक्टिविटीज़ हैं, एक तो हमारा सियाल फूड एग्जीबिशन जो होता है अल्टरनेटली मॉन्ट्रियल और टोरंटो में। जी जी End of this month, there will be a sizable delegation from Pakistan participating in the Sial Food Expo being held in Montreal, this time from 29th of April till 1st of May. ओके One. Secondly, we are expecting हमारा एक bilateral draft agreement on investment promotion and protection है। उस पे the two delegations will be meeting in the month of June, 2 months from now. एंड जो बायलैटरल ट्रेड फिगर्स हैं 2025 के साल में, दैट इज अ 11% इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज कंपेयर टू 2024। तो 11% इंक्रीज इज अ बिग डबल डिजिट प्रोग्रेस गिवन द, आपको पता है कि यहाँ पे भी इकोनॉमिक हालात थोड़े से अंडर स्ट्रेस हैं। जी जी और पाकिस्तान के जो रीजनल सिचुएशन ओवर द लास्ट 1 ईयर रही है ओवरऑल, उसके बावजूद 11% इंक्रीज इन बायलैटरल एक्सपोर्ट्स इन गुड्स is a big jump. There is a 8% increase in trade in services sector between Pakistan and Canada. उसमें हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं आईटी सर्विसेज। तो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दोज लाइंस। तो चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कारनी की गवर्नमेंट को तकरीबन 1 साल हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। करेक्ट 26th of May last year they had taken oath of office after the April 2025 elections. जी The government here also needed time to settle down. So these are things which may take time, but big events के लिए and major breakthroughs के लिए you need some micromanagement, macro planning, and then execution of major trade, investment initiatives and projects. अच्छा सर, ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं हमारी कनाडा की, उस हवाले से क्या ऐसी अपडेट हैं जो आप कम्युनिटी को थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान से कनाडा आना चाहती है, चाहे वो स्टडी परमिट्स पे आना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा पे आना चाहते हैं, या परमानेंट इमिग्रेट होके आना चाहते हैं कनाडा, सो व्हाट इज़ इन द पाइपलाइन फॉर पाकिस्तान एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट जो अब जो प्राइम मिनिस्टर कारनी साहब की जो गवर्नमेंट है एंड द न्यू रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं? आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी समथिंग यू गाइस हैव डिस्कस्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर फॉर आवर ऑडियंस? देखिए, what I would like to share is कि Canada is traditionally has been a country of immigrants, जी and immigrants from anywhere in the world, and they have a very robust immigration system. And if you go to the IRCC, Canadian Immigration, Refugees and Citizenships Canada website, जी जी it is so interactive and so simplified. What we do normally in Pakistan is कि भाई हम किसी वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट को पकड़ लिया, उसको स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करवा दिया। ही डजंट नो कि सलीम SALIM लिखना या SALEEM लिखना। सो immigration consultant may charge certain amount of fee
to upload your application and documents. But I have also seen the podcast or social media post, media interviews of Canadian high commissioners in Islamabad, जी जी successive 2, 3 past high commissioners. They have been saying this on Pakistani TV channels also, that we request the applicants to fill in the forms themselves, so that you exactly know that Saleem SALIM है या SALEEM है. It shouldn't be कि पेज 1 में आपने SALIM लिखा है और पेज 4 में SALEEM लिख रहे हैं. जी 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 It is not rocket science. It is based on, they do not have country-wise quota. They do not, even जो immigration है, other than study permit or visitor visa or tourist visa and so on, it is a very simplified, interactive website. What we normally do is we don't go through the details, we don't read the checklist, we do not complete the documents the way they have to be uploaded. जी जी And then we make omissions and commissions ourselves. So there is no Pakistan specific discrimination. That is what been told to me by the relevant government departments in Canada, in Ottawa. But what we do is we also have to really know that Canada is a country of immigrants. They have hundreds of thousands of foreign students in Canada in different universities, from British Columbia to Alberta, Quebec, Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, Ontario, in all provinces from all over the world, whether it's Africa, Latin America, Caribbean, Asia, Europe, and so on. So what we have to do is we have to do our due diligence and get our share of the study permits and everything according to our needs. अच्छा मैज़र साहब ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि हमारी जो यहाँ पर कॉन्सुलेट्स हैं उनके अंदर जो करंटली जो सर्विसेज ऑफर्ड होती हैं उस पर थोड़ी सी ज़रा 1-2 मिनट अगर आप रोशनी डाल दें ताकि लोग आपको सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, ताकि एग्जैक्टली दे नो कि व्हाट द काउंसलर्स आर ऑफरिंग. आई नो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं चीज़ें, बट आई एम टेकिंग अ लिबर्टी, यू आर विद मी ऑन द शो, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछता चलूँ इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें, दैट विल बी अप्रिशिएटेड. The High Commission, or we have 3 consulates in Montreal, Vancouver, and Toronto. High Commission and the 3 consulates, we are at the public Pakistani diaspora, Pakistani community service on 24/7 basis. जी. One. Second, फॉर एग्जांपल आप हमारे हाई कमीशन की वेबसाइट पे आप देख लें तो पिछले हफ्ते हमारा न्यूज़ लेटर फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च अपलोड हुआ है. उस न्यूज़ लेटर के अगर आप लास्ट पेज पे देख लें, इट इज़ ऑन द हाई कमीशन फेसबुक पेज. जी जी. उस न्यूज़ लेटर के लास्ट पेज के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन और तीनों काउंसलेट्स के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स, टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर. Right. We have done it by design to make our access public and to make our access available online. One, so that anybody, when I say 24/7, that is what it means कि वहाँ पे email address डला हुआ है. Even if it is Sunday in somewhere here, you can send an email कि भाई मुझे इस बारे में मुझे वीज़ा लेना है, या मुझे नादरा कार्ड लेना है, या मुझे पासपोर्ट रिन्यू कराना है, या मैंने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट करानी है. जी. They have to go to that page, get the checklist, go through the prerequisites, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें. वन. सेकंड, 4 चीज़ें हमारी ऑनलाइन हैं. पासपोर्ट रिन्यूअल ऑनलाइन है. आप अपने घर बैठ के, अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट इस मशीन रीडेबल पासपोर्ट है तो आपने घर बैठ के रिन्यू करा सकते हैं. आपका पाकिस्तान का वीज़ा, इफ़ यू ओनली होल्ड अ कैनेडियन पासपोर्ट, देन यू कैन हैव अ पाकिस्तानी वीज़ा, फैमिली विजिट या टूरिस्ट वीज़ा, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगेन यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम होम. उसके लिए भी वीज़ा नादरा की वो सारी डिटेल उस वेबसाइट पे हमारी दी हुई है. थर्ड, अगर आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी है फॉर एग्जांपल, वो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन करानी है, देयर इज़ अ वे, वी हैव अ ऐप
और उस पर आप अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट और उसकी अटेस्टेशन, हम बजाय इसके कि किसी को हम कहें ऑल द वे फ्रॉम विनीपेग और सस्कतून और रेजाना से वो फ्लाइट लेके वैंकूवर चला जाए या ओटावा या टोरंटो आए, दे कैन गेट इट डन ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आपके जो वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गए, आपकी अटेस्टेशन हो गई, आपके नाजरा कार्ड, नाजरा सर्विसेज सर और एक क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ फेसबुक के ऊपर। क्वेश्चन वो ये है कि अगर आपका नादरा का कार्ड एक्सपायर हो गया है तो और आप कैनेडियन सिटीज़न हैं तो आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं नादरा के कार्ड पे, और ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल सकता है या आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा? उसमें बेसिक जवाब ये है कि जब यहाँ से आप पाकिस्तान जा रहे हैं, अगर तो आप टोरंटो से पीआईए की फ़्लाइट ले रहे हैं और तो पीआईए के काउंटर पे आपको पाकिस्तानी नेशनल स्टाफ मिलेगा, जी, and they know what are the terms and conditions of NADRA cards. They may be more receptive to let you board the plane. अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है इमिग्रेशन। जब आप बोर्डिंग पास लेते हैं फिर आप किसी भी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों के पास जाते हैं। इमिग्रेशन, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टेकिंग एनी अदर एयरलाइन, वेदर जितने भी कनाडा से पाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइटें हैं, मोस्ट कन्वीनियंट टर्किश एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन है, कतर एयरवेज है, एमिरेट्स है, जी जी ये 4 लाइनें हैं। इसके अलावा पीआईए खुद जिसकी डायरेक्ट फ़्लाइटें हैं हफ्ते में 4। जी, The point I want to highlight to my community and diaspora is, if you are taking a foreign carrier and you are transiting through third, fourth countries and traveling from country C, Canada, to country P, Pakistan, using airline of country X, transiting through an airport in country Y, जी so जी, you are going to create problems for yourself. ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कम्युनिटी से कि वो अपने जितने भी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की वैलिडिटी जो है उसको हमेशा ऑफ एंड ऑन दे शुड कीप या हैविंग अ लुक एंड रिन्यूड रखें, गेटिंग, बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलरली नादरा कार्ड का रिन्यूअल, पासपोर्ट का रिन्यूअल मस्ट है। गॉड फॉरबिड कोई फैमिली अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी होती है, देन यू हैव टू ट्रेवल सडनली ओवरनाइट, फिर आपको पता चलता है कि मेरा तो पासपोर्ट पाकिस्तानी एक्सपायर हो गया या मेरा नादरा कार्ड एक्सपायर है, एंड इफ फॉर्चुनेटली देयर इज अ पीआईए फ्लाइट अवेलेबल द सेम डे, मे बी द पीआईए कैन टॉक टू द इमिग्रेशन इन टोरंटो कि ये बंदा पॉइंट ए टू बी डायरेक्ट फ्लाइट पे जा रहा है एंड ही इज पाकिस्तानी ओरिजिन, and the only problem is his travel document is his Nadra card has just expired few months back. Humanitarian ground पे हो सकता है, immigration में or may not Okay. let you go because international travel is regulated by international civil aviation. करेक्ट करेक्ट, IATA के rules हैं, ICAO के rules हैं, airlines are bound by certain immigration related rules. Similarly, the immigration authorities in all countries of origin and country of departure and जो in between जो होते हैं आपके stop over या layover stations, you really have to respect all those airlines, airports, immigration authorities की formalities, for which the only reliable solution I can propose is please keep duly updated travel documents with you all the time. ठीक है, ठीक है। Thank you. अच्छा वैसे सर ये एक जाते जाते मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है कनाडा में, स्मॉल बिजनेसेस आपको पता है जैसे कि बहुत स्ट्रेंथन हो रही हैं, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू हैव फॉर आवर कम्युनिटी हु आर वाचिंग यू टुनाइट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि व्हाट इट इज़ देयर फॉर द हाई कमिश्नर टू डू टू प्ले हिज पार्ट, क्या आप कर सकते हैं और किस तरह हम फर्दर यहाँ रहते हुए अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन कनाडा भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ भी? देखें, पहला पॉइंट ये है कि हमारी जो अराउंड 400,000 पाकिस्तानी कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री इन कनाडा रहती है, उनमें से मोस्टली लोग प्रोफेशनल्स हैं जी, सो द बिजनेस कम्युनिटी इज़ टू स्मॉल।
One, I would request people to at least put one of the family members into small, medium, or large scale business ठीक so that you are seen on the business map of the country. One. सेकंड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत कम लोग हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली उसमें बहुत कम लोग हैं. अगेन आई वुड रिक्वेस्ट द पाकिस्तानी कम्युनिटी टू आल्सो पुट some of the family members, friends into import export trading business. Not necessarily only between Canada and Pakistan Canada, but also with the rest of the world. Because Canada is diversifying its trade with the entire world. So Pakistani community members engaged in business activity in Canada have to also take their share of the Canada's trade diversification. Third, Government of Canada and provincial governments, we have 10 provinces and 3 regions here, territories जो हैं, जी they are investing a lot in high-tech, clean energy, IT, AI, these fields, then defense, then mines, minerals, natural resources की exploitation. These are major focus areas of the Government of Canada. So the business community has to come in these sectors like IT is the most, I would say, the low-lying fruit. आपके जितने कम्युनिटी के मेंबरों के जो नेक्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन यंग लॉट है, they are very smart and they should be into IT business, and it does not need a lot of capital to start with. So I would urge my community members to have a sizable number of the community engaged in business, commerce, trade, investment sectors between Pakistan, Canada, Pakistan, and also with the rest of the world. मैसेज साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. आई एम वेरी थैंकफुल एज ऑलवेज. आपकी इनसाइट जो हैं दे आर वेरी वैल्यूबल फॉर आवर कम्युनिटी एंड फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई होप with and pray also that these wars would stop, mediations happens, negotiation takes place, and people move on with their life as soon as possible. जाने से पहले कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहें हमारे कम्युनिटी को तो सर प्लीज़ डू दैट, एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल गेट यू बैक अगेन एंड वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन अनदर एनवायरनमेंट इंशाल्लाह. My special message to the communities, they are doing exceptionally well as Pakistani community in Canada. As I said in your last program also, we have only few less than double digits out of 400,000. किसी को किसी minor accident या roadside traffic, there are only 8-9 people who are behind bars in Canada out of 400,000. So it is a very law-abiding community. Most of them are professionals, highly educated, very smart, hard-working, honest, law-abiding. Keep your name, keep Pakistan's name high, and you are second to none. Thank you, sir. Thank you, Jazakallah. बहुत शुक्रिया, sir. Stay blessed, sir, and we'll talk again very soon, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Viewers, this हमारे साथ थे the High Commissioner from Pakistan to Ottawa, Mohammed Saleem Saab, and I thought it'll be a great idea to get his perspective regarding the mediation Pakistan is doing in this conflict between Iran and Israel and also the United States. And you just heard what he just said, so we just hope that things will get better. वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. 416-786-4881 ये मेरी ऑफ एयर का नंबर है, इसको आप लिख लीजिए अपने पास. 416-786-4881 और अपना फीडबैक वो ज़रूर दीजिए प्रोग्राम के हवाले से. वॉइस ऑफ टोरंटो TV@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है. टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें
एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, और हमें अपनी दुआ में याद रखें, वॉइस ऑफ रमज़ान टेलीविज़न को हमेशा. एंड आई विल कम बैक टू यू अगेन नेक्स्ट वीक with another guest with a different program, inshallah. Bye bye for now. Assalamu alaikum.